Hello children, today we are going to see new grammar lesson punctuation. Okay, so before that we have to read some sentences. The cat is lazy, full stop. What is your name? Question mark. Okay, the cat is lazy, full stop. What is your name? Question mark. The first sentence is a statement. It ends with a full stop. In the last lesson, we have learned what is statement. A statement who is telling something or who is giving information to us. That is statement. And it ends with a full stop. Statement का end कैसे होता है? Full stop से. And the second sentence is a question. Second sentence is a question. What is your name? कि तुम्हारा नाम क्या है? It ends with a question mark. Question का end question mark से होता है. Okay. Okay. Now see, very important thing. All of you look at here. All these sentences begin with capital letters. All these sentences begin with capital letters. कि हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है. द कैट इज लेजी, सो टी इज कैपिटल. व्हाट इज योर नेम, सो डब्ल्यू इज कैपिटल. हर सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल ही लिखना चाहिए. प्रॉपर नाउन्स ऑल्सो बिगिन विथ capital letters. Proper nouns means the name of any person. For example, if my name Tejas sir, so T should be capital. If you are writing your name, then your first letter always capital. Proper nouns also begin with capital letters. Full stops and question marks are punctuation marks. Full stop और question mark को क्या कहते हैं? Punctuation marks कहते हैं. क्या कहते हैं? Punctuation marks. Okay. Now we have to solve question number 1. Rewrite the sentences correctly. Remember to begin each sentence with a capital letter and end with a full stop or a question mark. That means first आपको वो sentence जो है correctly लिखने हैं. And remember to begin each letter with a capital letter. कि पहला जो है capital लिखना है. And you have to identify whether it is a statement, and if it is a statement then end with a full stop, and if it is a question then it should be end with a question mark. Okay, so here Sonia and Sunny are my cousins. Sonia and Sunny are my cousins, full stop, because it is a statement. यहाँ पर ये small था, Sonia and Sunny name of person, so we have to write it capital. Sonia and Sunny are my cousin, and then give full stop. My friends and I like to visit the library. My friends and I like to visit the library. So first we have to write capital. My friends and I. Pronoun, I pronoun भी हम capital लिखते हैं. I like to visit the library. मुझे मेरे friends और मुझे library में visit करना पसंद है. Full stop. When you are going to Japan. When you are going to Japan. This is a question. ये question है. So when, W should be capital. When are you going to Japan? And then question mark. Next, I like fruits and milkshakes. I like fruits and milkshakes. This is giving us information. So I, capital. I like fruits and milkshakes. And full stop, because it is a statement. ये स्टेटमेंट है कि मुझे फ्रूट्स एंड मिल्कशेक पसंद है. द इंडिया गेट इज इन दिल्ली. द इंडिया गेट इज इन दिल्ली. द टी कैपिटल. इंडिया गेट नेम ऑफ वन प्लेस, सो इट इज अ प्रॉपर नेम. सो इंडिया गेट, इंडिया का आई भी कैपिटल, गेट का जी भी कैपिटल. द इंडिया गेट इज इन दिल्ली. दिल्ली नेम ऑफ सिटी. एंड गिव फुल स्टॉप. Where do you keep your books? Where do you keep your books? कहाँ पर रखते हो books? This is a question. So where, W capital. Where do you keep your books? Question mark. Okay. Okay. Now we have to solve question number 2. Rearrange the set of words to make correct sentences. Add correct punctuation marks at the end of each sentence. We have to rearrange the set of words to make correct sentences. Okay, and then we add punctuation mark, means statement, full stop or question mark. If the sentence is giving
or telling something information, then it is a statement and it should be end with full stop. And if the sentence is asking something, then it should be question mark. Okay. So here the cat jumped out of the window. ये हमें rearrange करके कैसे लिखा? The cat jumped out of the window. Full stop. Cat ने कहाँ से jump की थी? Out of the window. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Question mark है, तुम्हें टी लेना पसंद है? ये हमने सिर्फ rearrange किया है. A cup, would you like of tea? We have, after rearranging it, we have written would you like a cup of tea and question mark. There is in the garden a mouse. There is a mouse in the garden, and it is a statement, so give full stop. Is the market where? Is the market where? After rearranging it, where is the market? And then give question mark. Where is the market? कहाँ पर है market? Now see the doctor you will. Now say the doctor you will. After rearranging it, the doctor will now see you. The doctor will now see you. अब आपको डॉक्टर देखेंगे. Full stop, because it is a statement. Fell loudly the rain on the rooftops. The rain fell loudly on the rooftops. कि rain कैसे fail हो रही थी? Fell loudly on the rooftops. Okay, छत पर जोर से गिर रही थी. Okay, now see on page number 52. Now read the sentences. Now you have to read the sentences. Maya, Priya, Meena and Gayatri are my friends. I bought pencils, pens, erasers and notebooks. Okay. Commas help to separate words in a list. अगर सेम वर्ड्स है एक ही लिस्ट में तो उन्हें सेपरेट करने के लिए वी यूज कॉमा. नाउ सी, कॉमास हेल्प टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट. अगर लिस्ट में कुछ वर्ड्स है और वो एक साथ लिखते वक्त हम उनके बीच में कॉमा लगाते हैं. माया, प्रिया, मीना एंड गायत्री आर माई फ्रेंड्स. I bought pencils, pens, erasers and notebooks. Comma means कैसा होता है? ये short full stop की तरह होता है. Okay. Commas help to separate words in a list. Okay. But one more note is here. We do not add a comma before and. And के पहले हम comma नहीं लगाते. See, यहाँ पर है ना प्रिया, माया, प्रिया, मीना. बट एंड के पहले हमने कॉमा नहीं लगाया है. सो ओनली कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके. नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर पुटिंग कॉमाज वेयर नेसेसरी. ओके. वेयर यू फील नेसेसरी टू फिल कॉमा यू हैव टू राइट. गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर आर मेटल्स. गोल्ड, आयरन, सिल्वर एंड के पहले नहीं होता है, इसलिए सिल्वर के बाद एंड. Copper are all metals, and then full stop. My favorite subjects are English, maths and science. So my favorite subjects are English, maths and science. English, maths and science. Priya, Mary and Fatima love to play basketball. Priya, Mary and Fatima love to play basketball. Full stop. Do you want a book, a toy or a pen as gift? Do you want a book, a toy or a pen as a gift? Do you want a book, उसके बाद comma, a toy or a pen as a gift? Question mark. Mother bought bread, eggs, milk and honey from the market. चलो यहाँ पर कहाँ का कॉमा होगा? मदर बॉट ब्रेड, एग्स, मिल्क एंड हनी फ्रॉम द मार्केट. सो इन दिस वे वी हैव लर्न 3 punctuation mark, state, full stop, question mark and commas. Full stop when we are writing statement. Statement क्या होता है? जिससे हमें कुछ information मिलती है. Okay, and it ends with a full stop. Question means if the information has been asked. अगर information पूछी गई है
तो वो हो गया क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गए पंक्चुएशन मार्क्स. एंड कॉमास, कॉमास मीन्स व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग इन अ लिस्ट, दैट टाइम वी हैव टू सेपरेट वर्ड्स, हमें कुछ वर्ड वो सेपरेट दिखाने होते हैं. सो गोल्ड कॉमा, आयरन कॉमा, इस तरीके से, तो तब हम कॉमा यूज़ करते हैं. सो कॉमास हेल्प टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट. अगर कुछ लिस्ट है वर्ड्स की, उन्हें सेपरेट दिखाने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर.